Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Arafat mujeeb from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter number 15. Chapter is about stars and the solar system. This is 8th standard science, and in this chapter today my topic is about phases of moon. Moon is of different phases when it has rotation and revolution around the earth, and it is known as a natural satellite of the earth, and it completes its revolution approximate 27.5 day में complete करता है one revolution around the earth. That with the help of this diagram I will study you about the different phases of the moon. There are total 8 phases of the moon: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is the new moon. This is the waxing crescent moon. ये देखिए crescent moon. This is the half moon. This is the waxing gibbous moon. आधे से भी ज़्यादा. यहाँ full moon. Here it is the waning gibbous. Then it is the another half moon that in last quarter में आता है. Then it is the 8th phase of the moon, that is the waning crescent moon. When first phase of the moon is the first day of the month is the full new moon. New moon comes between the sun and the earth. Earth in this is the center, and moon is revolving around the earth in its own orbit, and the sun is the source of light. When the moon is between the earth, and it comes between the earth and the sun, and there is the falling of the sunlight is blocked at the one disk of the moon. यहाँ पे एक डिस्क है, वहाँ इसके पीछे दूसरा डिस्क है. ये जो सनलाइट यहाँ से आती है सन से, वो ब्लॉक होती है. It is blocked by the one side of the moon, and the earth. जो अर्थ पे ये लाइट नहीं पड़ती है, सनलाइट नहीं पड़ती है, जो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके मून से रिफ्लेक्ट करके वो अर्थ के ओर पड़ सकती है. आपको पता है कि जो मून है, इट इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. इट डोंट हैव इट्स own light. It don't emit out its own light. When the sunlight falls on the surface of the moon, then it becomes a luminous. Actually, those sunlight rays reflect on its surface. When that part of the moon which reflects the sunlight is visible to us and can be seen by the surface of the earth. जिस सरफेस से मून सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वही पार्ट ऑफ द मून विजिबल रहता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. यहाँ देखिए, जो भी लाइट यहाँ सन से आते नंबर 1 में, न्यू मून में क्या है, हाउ न्यू मून, ये रहता है इनविजिबल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अगर हम देखने की भी कोशिश करें, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ it remains invisible. Then the next 2 or 3 days it looks like the crescent, sharp crescent. Then we can say, first of all, how new moon is caused. When the sunlight comes from the sun, and it is the light blocked by the one portion of the moon, and those sunlight does not fall on the surface of the earth, not reaches on the surface of the earth, and the moon becomes invisible on the surface of earth. After 2 or 3 days, there is the appearance of crescent type moon, crescent phase. It is the second phase of the moon, and this here it is known as the waxing. आप इसमें देखिए, when there is a revolution of the moon, here take place the waxing and waning. waxing में क्या होता है, जो मून का जो फेस होता है वो इंक्रीज होता है. वो फर्स्ट 15 days में the phases of the moon increases, and last 15 days the phases of the moon is decreasing. That is known as the waning. तो इसमें 2 टर्म्स आते हैं, वैक्सिंग एंड वेनिंग. यहाँ देखिए, वैक्सिंग
तो अब जो मून, यहाँ मून डिसअपियर रहता है एंड इट इज नॉट सीन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिल्कुल छुपा हुआ रहता है, then this is known as the new moon, first day of the month. When the sunlight is blocked by this moon, it comes between the earth and the sun, और इसके जो रिफ्लेक्शन नहीं पड़ती है अर्थ के सरफेस पे, जिसके कारण मून दिख सकती है बट नहीं दिखती है, इट इज ऑल द लाइट इज ब्लॉकड, और जो अर्थ का जो अर्थ है, अर्थ पे सन मून की लाइट नहीं पहुंचती है एंड इट बिकम्स इनविजिबल. Then after 2 or 3 days, it appears in a crescent in form that is known as a waxing crescent. After a week, after first week, then there is the appearance of crescent. Within the first week, there is the appearance of crescent face of the moon. Then after first week, after the first week, there is the half moon. Half moon यहाँ बनता है. This half moon आप देखिए ये this is the half moon. Half moon appears. क्या होता है? Only this part of light, जो सन से लाइट रेज इस पे पड़ती है, वही रिफ्लेक्ट होके, वही रिफ्लेक्ट, जब भी सन लाइट यहाँ से पड़ती, यहाँ से पड़ के रिफ्लेक्ट करके यहाँ अर्थ सरफेस पे आ जाती है. जब अर्थ सरफेस पे आ जाती है तो यही पार्ट क्या रहता है? विजिबल रहता है, और ये पार्ट इनविजिबल रहता है. दो we can say now it is the first quarter phase of the moon, जिसमें ये आधा होता है, बिल्कुल हाफ 1/2 फेस में होता है, आधा फॉर्म में. तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होती, जो सनलाइट यहाँ पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होके अर्थ सरफेस पे वो दिखता है वो फेस, और ये फेस नहीं दिखता है, तो हाफ ही दिखता है अर्थ का, मून का हाफ ही फेस दिखता है, हाफ छुपा हुआ रहता है. This half moon appears in the first day of the second week. याद रखिए, first day of the second week there is the half moon. यहाँ crescent part में देखिए, इतना ही when the sunlight reaches here, when the sunlight reaches here, यहाँ पे sunlight, then this part reflects the light. This part reflects this part. तो यही इतना ही पार्ट हमें यहाँ दिखता है, बाकी आधा से भी बहुत ज्यादा छुपा हुआ होता है. खाली इट इज अ क्रिसेंट फॉर्म, ऐसा कामा फॉर्म हमें अपियर होता है, क्योंकि इतना ही पार्ट में रिफ्लेक्शन सन की होती है, और यही फ्रॉम द अर्थ सरफेस इट रिमेन्स विजिबल. सिमिलरली इन दिस केस half of the moon, it is the third phase, it is the first phase, it is the second phase, it is the third phase of the moon. Now fourth phase of the moon is the waxing gibbous phase. तो आधा से भी ज्यादा यहाँ क्या होता है, जब सनलाइट इस पे पड़ती तो आधा से भी ज्यादा यहाँ अर्थ सरफेस पे विजिबल रहता. ये देखिए, ये देखिए, ये पार्ट अब आधा से भी ज्यादा, अब आधा से, इसको कहते हैं, इस फेस को, फोर्थ फेस को वैक्सिंग गिबस. आपको नहीं लगता यहाँ पे जो अब मून जो है वो अपीयर हो रहा है, उसका जो फेस होता है वो इंक्रीज होता जा रहा है क्रीसेंट फॉर्म में, हाफ, अब हाफ से भी ज्यादा यहाँ दिखाई देता है. दिस फेस इज नोन एज द वैक्सिंग गिबस फेस. इट टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट वीक एंड विद इन द सेकंड वीक there is the appearance of the waxing gibbous. Now the full moon appears on the 15th day. On the 15th day, that means at the last day of the second week. Last day of second week में appear होता है कौन सा moon? शबाश, there is the appearance of full moon. जो sunlight यहाँ पड़ती है, बिल्कुल वो सारा की सारा light reflect होके अर्थ surface पे पड़ती है. All the light rays from the sun falls on the earth's surface. Now this moon, this sunlight, when the sunlight fall on this moon, here all the light reflected by the moon falls on the earth. On the earth, we can see the full moon in a full phase. It is the full moon. It appears on. It is the fifth phase. We can say the full moon. तो यहाँ फुल मून क्या होता है? फुल मून होता है, इट इज एट दैट टाइम द अर्थ इज इन बिटवीन द सन and the moon. Earth is in the center now.
there is the appearance of full moon. All the light rays after sunlight falls on the moon, and all those light rays reflect on the surface of the earth, then it appears in a full in face. तो फुल मून यहाँ आपको मिलता है आफ्टर द on the 15th day. After the 15th day there is a waning. Now the face is decreasing here. क्या हो जाता है यहाँ पे? Here take after the 16th 7th day. Now this enters the third week. After the third week, first second day of the third week, क्या होता है? There is a sixth phase of the moon, that is a waning gibbous. यहाँ waning gibbous आधा से भी ज्यादा दिखाई देता है, और यहाँ हम कहेंगे आधा से जो थोड़ा कम अब ये डिसअपियर होना होता है. यहाँ धीरे धीरे इसका फेस इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ धीरे धीरे इसका फेस जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है. इट इज अ वेनिंग. Waning means decreasing the face of the moon. Now, after the 15th day, there is a full moon. On the 15th, after the 15th day, some part of the moon is disappearing. Only there is a formation of the waning gibbous face. Waning gibbous. Yahan waning gibbous face. Then, after that, half of the moon is hidden. Half of the moon face is hidden and half is appearing. This is known as last quarter. And it is the last day of the third week. Here half moon is appearing and half moon remains hidden. Then we can say this is the seventh phase of the moon. Now आधा से भी फिर ज्यादा ये छुपा हुआ रहता है. Then there is a formation of the crescent, that is known as the waning crescent. It is because of the moon which is revolving around the earth, and earth is at the center, and the sun which is above the moon. When the moon comes in between the earth and the sun, then there is the appearance of the new moon. Then new moon क्या होता है? ये invisible रहता है, can't be seen on the surface of the earth, because all the light rays coming from the sun is blocked. Only one face is जो sun के और जो face है, the face which is towards the sun remains visible, and the face which remains towards the earth remains totally invisible. Then there is the waxing crescent. Only some part of the moon is appearing in a comma-shaped, thin, sharp comma-shaped, that is known as waxing crescent. Then there is a half of the moon appears and half remains disappear. This is in the first quarter. We can say it is the half moon. Then there is a half से भी ज्यादा appear हो रहा है यहाँ पे waxing gibbous. Then there is a formation of the full moon on the 15th day of a month. Then a whole of full moon is when you see the full moon on the earth, that the day is the 15th day or the 14th day. On the 14th day or the 15th day, there is the appearance of full moon. Now there is again the disappearing in the last quarters, in the last 2 weeks, there is a disappearing in the face of the moon. Then there is a waning gibbous. आधा थोड़ा कम रहता है, थोड़ा इसमें full moon अब गायब हो जाता है. यहाँ पे name is a waning gibbous. Then आधा से भी ज्यादा ये गायब हो जाता है, आधा से ज्यादा रह जाता है. Then is the last quarter. यहाँ फिर ज्यादा ये डिसअपियर रहता है. अगेन इट गिव्स इन द क्रिसेंट. यहाँ देखिए क्रिसेंट जो है, यहाँ क्रिसेंट का जो ये है, इट इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द राइट. यहाँ ये कॉन्वेक्स है टुवर्ड्स द लेफ्ट. यहाँ ये कॉन्वेक्स है राइट की ओर. यहाँ वेनिक क्रिसेंट में जो कॉन्केव कॉन्वेक्स है, दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट. दैट मीन्स वी कैन से हियर इट इज टुवर्ड्स द सन. This is the convex in face, and towards the sun this is concave in face. This concave in face is known as the waning crescent, and this is known as the waxing crescent. Dear students, I hope you understand about the different phases of the moon, how the phases of moon is appearing in the sky in a month. It is because of the revolution of the moon around the earth,
when different phases are made because of the sunlight, when there is a rotation and revolution in a moon, the moon revolves around the earth and the moon itself revolves around the sun. I hope you understand about the different phases of the moon. Thank you very much.